They have a very stacked squad. We're all set for the pull. The Grumpies won the toss and have elected to start on defense. बहुत ही मज़ेदार गेम होने वाला है दोस्तों. Please stay tuned for the entire game and I hope that you guys have a good time. Grumpies versus the Icebreakers. Sunil and Farhan. I see Sunil, Farhan, Rohan, and on the girls I see Prerna, Anundya, and Dhwani. Pull is coming up by number 16 against the wind. The wind has eaten up the disc and landed it in the middle of the field. Missed a back cap. Rizwan picking up the disc. Nice in cut by Atul. Lovely handler movement there between Rizwan and Atul. Mac coming back for the dump. Fake there. Rohan putting up the disc. Rohan putting up a good mark. बहुत ही बेहतरीन कट अतुल द्वारा. Looking for options. Nice chilly offense. Good flow by the Icebreakers. Mac coming in on the sideline. And a hammer. Classic Mac hammer to Bhavya and it's a score. Back cap to back cap. Boom. 1 up. Icebreakers. I think इस बार प्री गेम शो में डिस्कस हो रहा था कि मैक ने कितने सारे हैमर्स डाले थे लास्ट सीजन मुंबई अल्टीमेट लीग में. And I think this is a sign of things to come with the hammer on the first point there. Maqsood Chaudhary, as you know, ladies and gentlemen, is an India level player. He's here. He's one of the organizers from the off-season ultimate, and terrific handler, terrific cutter, just an all-round good guy. He has an international level tournament coming up. He's traveling with Ambush to the Netherlands and they're going to compete in the Worlds. So all the best to all the Ambush players, anybody listening on the field. All the best to you guys and I hope you have a great tournament. DB calling for Icebreakers to line up. The disc coming up by Altaf. Lovely floaty OI pull there. The disc lands in the middle. Farhan picks up the disc and centers to Sunil. Lot of grumpies on one side. Nicely centered to Farhan. Looking for options. Person marking there. Beautiful in cut by Rohan. Looking for options. Nice dump to Messi. Messi back to Sunil. Option is there and Sunil with Rohan with another fantastic in cut. I think Beast is one of the quickest players we have in Mumbai Ultimate and almost a terrific layout deep there by Altaf, and that's a little bit too far on that put. Just lands outside. Just lands outside over there and it's a turnover. The disc now going to go to the Icebreakers. I think it's Altaf walking up to the disc to pick it up. Anybody who's watching the live stream right now, drop a comment. अगर आपको हिंदी में commentary चाहिए. Last time मैंने Icebreakers की game पे हिंदी commentary दिया था और I think काफ़ी लोगों को काफ़ी मज़ा आया.
तो अगर आपको हिंदी में कमेंट्री चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. और ये नोमान है जो डिस्क के साथ आ रहे हैं. The score is now 1-0 and it's a huck. Beautiful put there against the wind. Dhwani and Messi trying to read the disc, but Altaf gets it. Altaf to Sahitra and it's a score. Great contact and great connect between the two boys from the Voice of Ahmedabad. They just looked each other in the eye, and one put it up and the other one was just waiting for it in the end zone with an easy grab. बहुत ही बढ़िया point. Icebreakers are definitely one of the favorites to win the Mumbai Ultimate League. They are as you all probably know, they were the winners of MUL Season 1. And this, I can tell you, ladies and gentlemen, they have a very strong team this year as well. The Icebreakers owner Bhavya did a very good job at the auction. He used the strategy of patience. Just held on to his money for the right time and bid on players that he was really interested in. And I think as a result of that, his team is stacked. DB, as you can see, is the owner of the Grumpies, asking everyone to maintain time. That's happening also as a result of the first game, the Grumpies versus the Bomb Squad, जिसमें काफ़ी the Bomb Squad ने काफ़ी समय लिया. There, Mac up with the pull, with the wind. Beautiful floaty pull there. Dhwani going to receive the disc. Centers to number 18. Mac walking up to the disc. Sahitra playing a poach. Now she's on Dhwani. Mac with a body mark, and it's a drop. Manan, forget about it, Manan. Just get on D and make up for it, as we saw. Now the disc is with Sudhu. Center to Mac. Icebreakers wanting to play chilly offense. Always dependable Sahitra Gure. Mac with the disc on the sideline. And it's a beautiful put there. Oh! Good attempt. Nice layout, but just a little bit out of his reach there. Good attempt. The Grumpies have a chance to redeem themselves. They are back on offense right at their end zone line. If you watch some of the highlights from the last season, from the last week's games, Sunil's buttery forehand flicks are a thing to watch out for. Afzal on the mark, doing a great job there of the mark. Good pressure on the disc. Sunil manages to get it away. Mac on the disc now. Good pressure from the Icebreakers. Nice in cut by Messi. Fake and a put to Sunil towards the end zone, and he gets it. Messi to Sunil, this is a connection that has been going on for generations. They probably have been best friends for years and generations. Now to Manan. Manan with the disc, looking for options, looking for a dump. Good pressure by defense. And it's a turnover. This is, I think, an area that the Grumpies possibly need to improve on. What to do when they have the disc. Now Sahitra running deep and Mac throws it. Sahitra trying to read it, but just a little too far. Afzal also was trying to get there, पर उनके पहुंच से थोड़ा सा बाहर था. थोड़ी देर अब हम हिंदी में कमेंट्री करेंगे दोस्तों. स्कोर है 2-0. Icebreakers are up. Disc with Messi. सेंटर किया नंबर 18 निखिल को. मैक बोल रहे हैं कि बैक हैंड फोर्स है. अभी स्ट्राइक मार कर रहे हैं और ये पुल. 3 आइसब्रेकर्स, 1 ग्रम्पी और डिस्क बाहर जाती हुई. फिर भी आइसब्रेकर्स नहीं छोड़ रहे हैं डिस्क को. क्या बताएं, उनको डिस्क इतना ज़्यादा पसंद है कि वो छोड़ते ही नहीं है. अंदर रहे बाहर रहे. Commitment to the disc is definitely commendable, ladies and gentlemen. Disc is now back with the Icebreakers. They are on the sideline. Messi on the mark. Lovely cut by Sahi. Sahi always appears to be open. And Afzal trying to make a run deep. The put is up. Mac trying to read it. Who's going to get it? And it's Afzal. Chili Afzal. And it's an injury call. And Sahitra trying to get the... There was a call. Let's see what the discussion is about right now. देखते हैं कि क्या होने वाला है. सुनील, अफजल, मैक और अनुद्या सब इन्वॉल्व थे उस पॉइंट में, उस बिड पे.
स्पिरिट जो होता है, कई बार आप अल्टीमेट प्लेयर्स को सुनते, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो स्पिरिट के बारे में बात करते रहते हैं. ये द होली स्पिरिट वाला नहीं है. ये स्पिरिट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है, जो कि आई थिंक हर एक खिलाड़ी में इंस्टिल करने के लिए अल्टीमेट में एक गेम का हिस्सा ही बनाया गया है. बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है आई थिंक एनी स्पोर्ट्समैन के लिए, एनी खिलाड़ी के लिए. और देखते हैं क्या होता है. सुनील इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. 30 सेकेंड्स होता है रिजॉल्व करने के लिए कोई भी प्ले. मैक और सुनील डिस्कस कर रहे हैं. आइस ब्रेकर्स, एज यू नो, आर 2 up. They are at the top of the points table right now. Grumpies at the bottom of the points table. If the Grumpies can win this game, it will be a major upset. I think the call has been retracted, and the disc is going to go to the possession of the icebreakers. बात अभी भी चल रही है. Sunil has accepted that the call it's not a foul, and disc is going to be considered. I'm really sorry, ladies and gentlemen. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था. The disc is considered a turnover, and Sunil is going to pick up the disc for the Grumpies. They are upwind, so the wind is actually blowing from the right of your screen to the left of your screen. Afzal on the mark, Sunil with the disc now. Looking for options to center to Nikhil. Nice cut there by Messi. जैसे मैंने आपको कहा कि सुनील और मेसी बचपन से भाई हैं, और मनन डीप भाग रहा है, पर Messi with the disc on the sideline, and he puts it up for his brother Sunil. I mean, not actually his brother. And again, some contact there in the middle of the field between Afzal and Sunil. I hope neither of them are injured. Turnover. Risky put there by Messi because he didn't have too many नोमान नंबर 77 खेल रहे हैं पॉइंट पे, और अल्ताफ साइड लाइन पे हैं. निखिल जा रहे हैं डिस्क को उठाने के लिए. आई थिंक ही मे बी इंजर्ड एज वेल, बट इज स्टिल प्लेइंग. वो कह रहे थे कि उनका थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है. मैक ऑन द मार्क. निखिल विद द डिस्क, अपलाइन, और ये डी डिफेंस. और कोई कॉल है यहाँ पे. अनकंटेस्टेड फाउल. डिस्क सुनील के पास. क्या सुनील हक डालेंगे? मनन भाग रहा है. क्या सुनील डालेंगे? ऑप्शंस देख रहे हैं. गुड कट बाय अनुंदिया. ऑप्शन उन्होंने दिया, सुनील को सेव किया. डंप के लिए देख रहे हैं. आई थिंक ग्रम्पीज को डिस्क सेंटर करना चाहिए. अच्छा कट मेसी द्वारा. मेसी टू सुनील. सुनील बटरी फोरहैंड फेक नहीं डाला उन्होंने, होल्स्टर किया. सुनील टू निखिल. अभी सेंटर कर रहे हैं डिस्क को. ध्वनि बिल्कुल सही कह रही है. ध्वनि कह रही है कि आराम से खेलेंगे, कोई प्रेशर नहीं लेना है. ब्यूटीफुल इनसाइड ब्रेक बाय ध्वनि टू अनुद्या बैक टू सुनील लुकिंग फॉर हिज बाजीराव मस्तानी फोरहैंड फ्लिक. Centers the disc to Dhwani. Right call. Now to Manan. Nice chilly offense. Good movement. Now to Nikhil. Nikhil looking for options and he puts it up. Puts it up for oh no. Sunil banging into Anandya and dropping the disc in the end zone. काफ़ी पेनफुल क्योंकि ये पॉइंट पूरा इन्होंने कितने अच्छे से डिस्क को मूव किया, पर फिर भी एंड जोन में जाके थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन के वजह से एक ग्रम्पी दूसरे ग्रम्पी के ऊपर गिरते हुए टर्नओवर.
अनफॉर्चुनेट बट अनफॉर्चुनेट इस टाइम पे आइस ब्रेकर्स को आई मीन ग्रम्पीज को हार नहीं माननी चाहिए. ऑफेंस पे जाकर चिलियो आई मीन अभी डिफेंस पर जाकर उनको डी निकाल के स्कोर करना है. एंड एज फार एज द आइस ब्रेकर्स आर कंसर्न्ड, मैक आराम से डिस्क को उठा के एंड जोन लाइन पे लेके आ रहे हैं. मनन मार्क पे, lovely cut to Sahitra, lovely put to Sahitra. Sahitra is always open somehow. Now to Chandan. मैक भाग रहे हैं. चंदन ने होल्स्टर किया. सेंटर्स द डिस्क टू फैजान. Centers the disc to Faizan. Now the disc to Noman. Now the disc to Noman. Noman to Faizan. Faizan, Noman puts it up, but throws it to the opponent, Dhwani. Dhwani calmly collects the disc and now centers to Shivam. Shivam to Nikhil. Nikhil back to Shivam. Good movement there by the Pune boys. 1-2, 1-2 करके निकल जा रहे हैं और ये अभी भी डिस्क निखिल के पास. निखिल sends it up to Messi and it's a score. बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ग्रम्पीज द्वारा. Score is now 2-1. It was an offensive point for the Grumpies, पर इतनी बार डिस्क बैक एंड फोर्थ गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफेंसिव पॉइंट किसका था. पर आई थिंक इस पॉइंट पे ग्रम्पीज को ये होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी था और उन्होंने किया. टाइम आउट कॉल कर रहे हैं आइस ब्रेकर्स. दोनों टीम के पास 2 टाइम आउट्स हैं, वो किसी भी हाफ में यूज़ कर सकते हैं. द स्कोर इज़ नाउ 2-1 लेडीज एंड जेंटलमैन. जो भी देख रहे हैं लाइव प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है ये मैच. क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने वाला है. फैजान तो कह रहे हैं कि आइस ब्रेकर्स जीतने वाले हैं. आपको क्या लग रहा है? हु डू यू थिंक इज़ गोना विन दिस गेम? Wonderful grab there by Messi in the end zone. And I think not a very good throw there by Noman on offense. Turnover to when he threw the disc to Dhwani. Score is now 2-1, and then the Grumpies really made them pay, or with the team not being able to get back on defense quickly. 1-2 करके निखिल और मेसी ने एकदम ऑलमोस्ट एंड जोन तक लेके चले गए. एंड इन द एंड इट वाज अ स्कोर बाय मेसी. दोनों टीम अपने हर्डल्स में डिस्कस कर रहे हैं. आई थिंक आइस ब्रेकर्स के लिए बस यही कह रहे होंगे कि हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें बस अपने बेसिक्स करने हैं और जो अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स हैं उस पर खेलने चाहिए. और ग्रम्पीज यही कह रहे होंगे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए. हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हार गए हैं. हम बिल्कुल ये गेम जीत सकते हैं यहाँ से. और अगर उन्होंने ये गेम जीत लिया तो एकदम बिल्कुल बाजी पलट सकती है. ये टेबल पूरा इधर का उधर उथल पुथल हो सकता है. एक और गेम चल रहा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन. अगर आप ऑफ सीज़न अल्टीमेट और मुंबई अल्टीमेट को फॉलो कर रहे हो तो दूसरे फील्ड पे आफ्टर बर्नर्स वर्सेस कटिंग चाय का गेम चल रहा है, मैच चल रहा है. वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम, काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है. तो अगर आपको वहाँ पे भी जाके देखना है तो प्लीज़ जाके सपोर्ट करिए. ऑफ सीज़न अल्टीमेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. स्पोर्ट्स कास्ट हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, दे डूइंग अ टेरिफिक जॉब. आवर स्पॉन्सर्स आर Refex. द jerseys are by Agile Sports. Mumbai Ultimate League is presented to you by Refex and Off Season Ultimate. कितना बढ़िया टूर्नामेंट है. बांद्रा जो एक सबब है मुंबई में, वहाँ पे खेला जा रहा है एक ब्यूटीफुल ग्राउंड में जो कि है द विंग स्पोर्ट्स अरीना. और अभी आइस ब्रेकर्स ऑफेंस पे हैं और डिस्क है यूटी के पास. नहीं, डिस्क अब आने वाला है, पुल आने वाला है. इट्स अ गुड पुल देयर. Disc drops and Tahir, one of the captains of no, he's not the captain, he's one of the organizers of the Mumbai Ultimate League, picks it up to Atul to Sahitra जो कि हमेशा फ्री होती है. मुझे पता नहीं वो कैसे करती हैं, पर जब भी उनको देखो वो फ्री होती हैं एकदम चुपचाप. Disc is on the sideline with Altaf. Now to Atul. Nice cut.
playing the Grumpies are playing an arrow defense, looks like, trying to force the disc to the sideline. The Icebreakers have switched to a horizontal stack offense. Disc now moving on the sideline to Altaf. Altaf looking for options. अच्छा defense Grumpies द्वारा. Atul breaking the cup a little bit and a beautiful break to Bhavya on the sideline. Bhavya looking for options. Puts an OI floaty throw and it's a defense. थोड़ा ज़्यादा ही फ्लोटी हो गया था वो थ्रो, बट अच्छा प्रेशर रोहन द्वारा. ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो सकता है दोस्तों. डिस्क अभी ग्रम्पीज के पास और ये दोबारा टर्नओवर. आई थिंक अगर ग्रम्पीज ये मैच दोबारा देख रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब भी डिस्क उनके पास वापस आ रहा है तो उनको एकदम फोकस करके टर्नओवर नहीं देना है. देन दैट्स अनदर पुट. Beautiful put by Altaf right to the end zone. Bhavya waiting for him by Noman. I'm really sorry again everybody. मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ अल्ताफ और नोमान के बीच में. पर्पल वाला नोमान है. बहुत ही बेहतरीन OI flick right at the back of the end zone. Bhavya using his height to his advantage and it's a score. अगर मैं ग्रम्पीज़ की टीम में होता इस बार तो मैं उनको यही एडवाइस देता, यही सलाह देता कि आप जब आप टर्नओवर आपको मिल रहा है तो मेक द अदर टीम पे फॉर इट. उनको ये डिस्क ईजिली वापस नहीं देना है, जो कि कहने में तो बहुत आसान होता है पर जब आप फील्ड पे हो तो काफ़ी मुश्किल होता है कई बार. यहाँ पे विंडी कंडीशंस भी हैं, बट यही आई थिंक यही डिफरेंस होता है एक विनिंग और लूजिंग में, जो कि स्पोर्ट्स का एक हिस्सा होता है. Grumpies are now on the line. Sunil, Nikhil, Messi, UT, the captain, and the girls are Prerna, and Dhwani, and Chavi. Now, Sushant with the disc. Haven't seen much of him in this game so far. He's going to put the pull up. Sushant आ रहे हैं disc के साथ और ये बढ़िया pull. Hopefully stays in. Lovely floaty throw, but looks like it may land. It's just landed just at the end. The disc to Nikhil. Nikhil looking for options. Good upline cut by Sunil. क्या यहाँ पे सुनील का वो फ्लिक देखने को मिलेगा? डिस्क सेंटर किया निखिल को. बहुत ही बेहतरीन ऑफेंस. Nikhil again looking for options. Disc back to Sunil and Sunil faking holstering. Nice cut by Prerna. Somehow free. Prerna to Dhwani. Good movement by the girls there. और ये फाउल कॉल किया सुधू पे. मार्किंग इन्फ्रैक्शन कि वो एक डिस्पेस के अंदर चली गई. बैक ऑन. स्टॉल काउंट वापस 0 से शुरू होगा. नाइस सेंटर देयर एंड एन अनकैरेक्टरिस्टिक ड्रॉप बाय मेसी. आई थिंक कमेंटेटर्स हमेशा अंडरडॉग के लिए ज़्यादातर रूट करते हैं और इस गेम में अंडरडॉग हैं ग्रम्पीज़, बट आइस ब्रेकर्स आर डेफिनेटली प्लेइंग वेरी गुड, प्लेइंग वेरी वेल. जब भी डिस्क उनके पास आ रहा है तो वो आसानी से उसको छोड़ नहीं रहे. नोमान विद द डिस्क. नोमान पुट्स इट आउट इनटू स्पेस टू अल्ताफ. अल्ताफ सेंड्स इट आउट टू साहित्रा. इज इट इनफ? फैंटास्टिक. बेहतरीन पुट. लवली रन बाय साही एंड इट्स अ स्कोर. Score is now 4-1 to the Icebreakers. भव्या जो Icebreakers के कैप्टन हैं और ओनर भी हैं, obviously as he should be pumped up हैं और जीतना चाहते हैं ये गेम. मैं अभी 1-2 दिन पहले वो जो अभी आज सुबह ही देख रहा था. आज इस बार जो प्री गेम शो हुआ था जिस पे तेजस, तान्या और जशन डिस्कस कर रहे थे ताहिर के साथ. प्रिडिक्शंस कर रहे थे कि कौन सी टीम जीतेगी इस हफ्ते. इस गेम पे आई थिंक ज़्यादातर सब ने कहा कि आइस ब्रेकर्स ही जीतने वाले हैं, बट आई थिंक सबका अभी फ़िलहाल अगर गेम देखा जाए तो जैसे प्रिडिक्ट हुआ है वैसे होने वाला है. बट
अल्टीमेट एक ऐसा ऐसा गेम है जो कि कभी भी पलट सकता है. इट कैन चेंज एट एनी टाइम. Icebreakers now with the disc. They are on defense. Dhwani trying to get some flow into the offense of the Grumpies. मुझे लगता है कि Grumpies भी on paper बहुत ही बढ़िया टीम है. They have some really good handlers, some really good cutters. I think they just need to start gelling as a unit. Maqsood Chaudhary there with the pull. Classic floaty IO pull. Disc center to Sunil. Sunil looking for options. Still waiting to see one of Sunil's Bajirao Mastani Talwar forehand flicks. Messi holstering, looking for options deep. Centering, looking for centering. Back to Farhan. Farhan to Messi. Mac on the mark. Anundya trying to come in, looking to clear, and it's a call, and the disc goes up. Is Farhan going to get it? And it's another bid by Altaf. Altaf with a casual backhand, and it's a lovely, well-placed put to Sushant. Sushant to Mac just at the end zone, and an OI bladey throw to Sushant. And it's another score for the Icebreakers. क्या बताएं दोस्तों? क्या बताएं आपको? ये थोड़ा गेम वन साइडेड होता जा रहा है. This actually doesn't reflect how the Grumpies can play at their full potential, but अभी जब टीम ठीक से जल नहीं हो पा रही है तो कभी कभी ये होता है. We're still early in the league. It's still week 2, so the Icebreakers and the Grumpies can definitely learn from everything that they are going through right now and try to come out of it. हमारे पास अभी कमेंट्री बॉक्स पे हमारे फेलो बॉम्ब स्क्वाड मेंबर आ गए हैं. ओम जो कि पुणे से हैं. तो ओम, अभी आपने एक अच्छा गेम खेला ग्रम्पीज़ के खिलाफ. कुछ अपने गेम के बारे में बताइए, मुंबई अल्टीमेट लीग के बारे में बताइए. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? मज़ा आ रहा है पूरा. पहली बार आया हूँ एमयूएल खेलने. इससे पहले 2 ही टूर्नामेंट खेला हूँ. आपके साथ हूँ तो और मज़ा आ रहा है. आपको कैसे लगा? क्या आपको कैसे लगा? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. इस बार बॉम्ब स्क्वाड ज़्यादा सारे टीम्स ज़्यादातर ओवरहॉल हो गए हैं. बस 1-2 प्लेयर्स हैं जो कि रिटेन हुए हैं. हमारी टीम में सागर और स्टेफी रिटेन हुए हैं, पर इतना यंग फ्रेश एनर्जी आया है बॉम्ब स्क्वाड की टीम में. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और दूसरे टीम्स को भी देखकर बहुत मज़ा आ रहा है. ताहिर विद द डिस्क गेटिंग रेडी फॉर द पुल. क्या लग रहा है आपको इस गेम में क्या होने वाला है? फिलहाल तो स्कोर 5-1 हो गया है, पर आपको क्या लग रहा है? ग्रम्पीज़ के पास कोई चांस है वापस आने का? सुनील कर सकते जो कर सकते अभी देखेंगे. डिस्क नाउ टू प्रेरणा. बिल्कुल सही कहा आपने. अगर कोई कर सकता है इस पॉइंट पे तो वो डेफिनेटली सुनील है. बट जैसे हमें पता है कि अल्टीमेट फ्रिस्बी एक टीम स्पोर्ट है. ये रहा सुनील. सुनील विथ लुक डीप, बट उन्होंने होल्स्टर किया. सुनील टू फरहान. फरहान ऑन द साइड लाइन. आई थिंक इनको डिस्क सेंटर करना चाहिए. Disc again to Messi. Messi still stuck on the sideline. Sahitra guarding him. Looking for Sunil. Looking for options. और ये hammer into the end zone. और ये सुनील ने पकड़ लिया है. सुनील स्काइड फैजान देर. और जैसे आपने कहा अगर कोई कर सकता है तो वो सुनील कर सकता है. फैंटास्टिक पुट, फैंटास्टिक ग्रैब. थैंक यू. आप सुनील के साथ खेलते हो? हाँ, हमारी टीम से, मतलब फ्लाइंग स्पिरिट से. और जब वो फोरहैंड फ्लिक मारते हैं वो एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि बाजीराव ने अपना तलवार निकाल के एकदम उन्होंने तलवार चलाया है. इतना स्मूथ, इतना कड़क फोरहैंड मारते हैं. कैसे करते हैं वो? अभी क्या बताऊँ. मेरा भी एक्चुअली यही मानना है कि क्या बताऊँ, कैसे करते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा. मुझे भी सीखना है उनसे. बहुत कुछ सीखने को है. हमारे कुछ और भी प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे बम्बई बंटाइज से और बॉम्ब स्क्वाड से. खुशी, अगले मैच में आप अपने क्लासमेट आंगी के खिलाफ खेलने जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? आर यू नर्वस? आर यू एक्साइटेड? हाउ आर यू फीलिंग? वेरी एक्साइटेड टू प्ले. और आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? बॉम्बे बंटाइज वर्सेस द बॉम्ब स्क्वाड में. हाँ, like I don't know, but
competitive match होगा and it will be fun to play. एग्जैक्टली लेडीज जेंटलमैन, मैं आपको बता रहा था स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के बारे में, यही होता है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि गेम कम्पिटिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रम्पीज़ गेम कम्पिटिटिव बना सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। Grumpy is now on defense. Disc from disc to Atul. Atul to Altaf. Altaf with a put. Looking for Atul in the end zone. Will he get it? Great run there by Atul. What a dish. 1-2. Boom. Fantastic put there by Altaf. Fantastic run by Atul. Layout bid try किया. पूरी कोशिश की फरहान ने, but at the end of the day, Icebreakers just too good on that one. Done. Bas. Score is now 6-2, ladies and gentlemen. Icebreakers in the lead. इस पॉइंट पर आइसब्रेकर्स ऑफेंस पे थे और उन्होंने ज़बरदस्त होल्ड किया. आई थिंक दे हैव कॉल्ड अ टाइम आउट. Maybe not, they're just lining up. The Grumpies are already on the line. Sunil back on the line. DB speaking to his captain UT about what should he be doing differently. जो डी पॉइंट्स है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. जो भी पॉइंट हो चुका है मेरे ख्याल से ओम, जैसे एक पॉइंट ख़त्म हो गया, अगर आपने कोई गलती की या कुछ हुआ, मुझे लगता है उसको भूल जाना चाहिए. हाँ बिल्कुल. और अगले पॉइंट में दोबारा पूरा मतलब फोकस के साथ आपको आना चाहिए. आपको क्या लगता है? हाँ बराबर है, मतलब जो गलती करते हैं वो भूल जाना चाहिए और अगले पॉइंट में 100% 200% दीजिए और स्कोर कीजिए अपनी टीम के लिए. करेक्ट, एकदम. सुशांत के पास डिस्क. सुशांत विद द पुल. लवली ओआई पुल विद द विंड. Nikhil not taking a chance, letting it fall. Passing it to Sunil. Sunil looking for options. Sunil to Bosco. Nice in cut there by Bosco. Bosco looking for options. Nice look ahead to Negi. Negi centers the disc to Sunil. Sunil threatening to go deep, and it's a put. It's another battle for the skies. Beautifully read there by Nikhil. Fantastic read. It's looking like a score, and it is. क्या पुट था सुनील द्वारा. ये उसका बैक हैंड भी मक्खन है, फोर हैंड भी मक्खन है. आई थिंक अमूल से उससे स्पॉन्सरशिप ले लेना चाहिए. क्या लगता है आपको? मुझे भी यही लगता है. मुझे लगता है वो एलियन है. एलियन है, करेक्ट. बस की बात नहीं है. हाँ, जादू लेकर आया उसको. बहुत, I mean, it's really a treat to watch Sunil's backhand and forehand throws. I mean, the effortlessness of it is what is amazing to watch, and I'm definitely a fan. I remember the first time I watched him play, it was on the beach. I play for the Storm Chasers team, और Flying Spirits के टीम आए थे हमारे पास यहाँ पे मुंबई में, और हम लोग बीच पर एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, और मैंने उससे पहले उनको खेलते हुए नहीं देखा था. तो जब उन्होंने पहली बार वो फोरहैंड फ्लिक एंड जोन टू एंड जोन फेंका एकदम इतने आराम से, तो मुझे लगा ये क्या रहा है. बहुत ही बढ़िया खेलते हैं. आई थिंक ही इज़ बिन प्लेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और वो ऐसे ही नहीं होता है, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है वो कंसिस्टेंसी और प्रिसीजन लाने के लिए. इस बार भी आई थिंक निखिल ने परफेक्टली डिस्क को रीड किया और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा. द ग्रम्पीज आर नाउ बैक ऑन ऑफेंस. द स्कोर इज 6-3. मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. अभी भी ग्रम्पीज वापस आ सकते हैं इस गेम में, बट आइस ब्रेकर्स पूरी कोशिश करेंगे कि उनको वापस नहीं आने दें. ताहिर काफ़ी रिलैक्स्ड साइड लाइन पे, आई मीन उस लाइन पे. द पुल कम्स अप just on the sideline. Saitra going to pick it up, quickly centers the disc to Mac. Mac looking for options immediately. Nice put there. Disc back with Mac in the middle of the field, looking deep. Good mark. Nice cut there by number 18. Disc back to Mac in the middle. Mac to Saitra. Good flow. ये डेफिनेटली एक चीज़ है नोटिस करने के लिए आइस ब्रेकर्स के ऑफेंस में, कितने आराम से वो डिस्क को आगे बढ़ाते हैं.
और ये स्कोर पता भी नहीं चलता है आपको क्या हुआ, इजी। इधर से पुल हुआ उधर स्कोर हो गया, इतना जल्दी वो लोग स्कोर कर देते हैं और इतनी आसानी से स्कोर करते हैं. आई थिंक इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी टीम हुज वाचिंग, एनी प्लेयर हुज वाचिंग टू वॉच मैक्स, साही and Altaf, Noman, watching them move the disc forward with precision. कितने आसानी से वो कर रहे हैं वो ठीक है, वो मतलब हर टीम करता है, बट जितने आसानी से वो कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट कैन बी अप्रिशिएटेड. Score has now moved to 7-3. Grumpy's putting up more of a fight in this game than they did against the Bomb Squad. That game ended on a scoreline of 13-3, so they definitely should not lose hope. The game is now at a half time, at the halfway mark. हाफ तब होता है जब एक टीम 7 पॉइंट पे पहुंच जाती है या तो 45 मिनट्स हो जाता है. तो सिंस द आइस ब्रेकर्स हैव रीच्ड 7, we are now at the halfway mark of this game. It's looking like the icebreakers are going to win it, but ultimate, as any sport, is a funny old game. कुछ भी हो सकता है. Grumpies कम बैक कर सकता है. मैं 2-3 दिन पहले ओम एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था, अंडर 24 जो हुआ था कुछ सालों पहले, और उस गेम में स्कोर लाइन था 7-2, ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही थी, और उस स्टेज से इंडिया टीम ने, मिक्स टीम ने कमबैक किया और गेम जीता. और 10-11 कुछ तो स्कोर था. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो तभी हो सकता है जब आप बिलीव कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक अगर आप अभी ग्रम्पीज के सर्कल में होते, जब भी जो कि अभी ये सर्कल में हैं, तो आप उनको क्या कहते? अगर आप कोच होते उनके या उनके टीम में होते तो आप उनको क्या कहते? जो भी मतलब जो मेन प्लेयर है, हार्ड बनाना है अपनी लाइन जो 7 की रहेगी, और सब प्लेयर को बोलेंगे कि फ्रेश लेग्स जो जिसके है वो अपना हाथ रेस करें. जो भी खेलना चाहता है मतलब पूरा 100% दे सकता है अभी भी, वो आए सामने खुद कर और 100% दे और स्कोर करने की ये बनाए, अपना पोजीशन बनाए टीम का. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे मौके पे प्लेयर्स को हाथ खड़े करके आगे बढ़ना है कि मैं अपनी टीम के लिए 100% करूँगा, और उससे क्या होता है कि दूसरे टीम को भी, पूरे टीम को भी मोटिवेशन मिलता है. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. और अगर हम आइस ब्रेकर्स के सर्कल में होते, अभी आप 7-3 अप हैं, आइस ब्रेकर्स के सर्कल में होते, तो आप उनको क्या बोलते? सबको यही बोलते कि अभी भी लाइट नहीं लेना है गेम को. बिल्कुल. वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसा नहीं है कि हम जीत गए इधर से, लाइटली नहीं ले सकते, इतना ही बोलता. और उनका हौसला बढ़ा था. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. कोई भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. आप 7-3 अप हो, 10-3 अप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने लाइटली ले लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा टीम, जैसे कोई भी टीम पीछे से आके आगे निकल सकता है. ये वही वाली कहानी हो गई ना, हेयर एंड द टॉर्टिस, कछुआ और खरगोश. तो लेट्स सी इफ द ग्रम्पीज कैन बी द कछुआ, whether they can make a comeback like a dark horse in the second half of this game. The score is now 7-3, ladies and gentlemen. Icebreakers leading. But don't go anywhere, क्योंकि ये गेम कहीं भी जा सकता है. The Grumpies can make a comeback. काफ़ी मोटिवेशनल लगा उनका जो स्पिरिट सर्कल हुआ था अभी. देखते हैं क्या होने वाला है. ध्वनि कह रही हैं कि आइस ब्रेकर्स की टीम से 7 लोग लाइन पे होने चाहिए ताकि पुल जा सके. Yes, ready with their hand up, ready and awaiting the pull. Icebreakers. Sushant with the disc, ready to make the pull. Disc going up by Sushant. Let's see who's going to receive it. 18, and the disc is centered to Sunil. Sunil to Nikhil looking for options.
सुशांत कुछ कह रहे हैं. Nice cut there by Messi. Messi to Sunil. Good movement. अनुंदिया भाग रही हैं. Is it going to go up? Good mark there. Foul call there by Sunil on the mark. Sushant on the mark. दोनों बात कर रहे हैं. This coming in at stall 6. Sunil to Messi. Messi stuck on the sideline. I think उनको disc center करना चाहिए. Very good. Nice dump there. Looking for Dhwani on the line again. Good cut. Good cut there by Chaitanya. No, I'm sorry. I don't know number 16's name. Disc back to Messi on the sideline center. The disc Grumpies. Very low release. ऑलमोस्ट हो गया था. It was almost a score for the Grumpies, but unfortunately it's a turnover. यही वो थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें इस पॉइंट पे जबकि वो ऑलमोस्ट एंड जोन पे पहुंच चुके हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा और पेशेंटली खेलें, 5 पासेस 10 पासेस ज़्यादा अगर करें तो मुझे लगता है हर बार वो स्कोर करेंगे. अभी वो मैच का सिचुएशन अभी ठीक नहीं है ना, वो कम स्कोर है ग्रम्पी, इसलिए ऐसा होता है कभी कभी. बिल्कुल सही कह रहे हो. Sushant to Sahitra. Icebreakers now back on offense. Let's see if they make this another easy score or if the Grumpies makes it a difficult one. Looking for the D there. Sushant with the disc, sending it up. Messi versus Afzal. Who's going to get it? And it's Messi all the way. Messi to Nikhil. Yeah, I have perspective. In. We've given them perspective from the sideline, and the disc is in. Disc to Nikhil to Sunil. Sunil looking for options. Too much crowd on the line, and it's another foul call on the mark. I think it's a call, it's a violation. लोग अभी भी बाहर रहे हैं. I think सबको थोड़ा communicate करना है. Icebreakers on the defense, giving their 100% even though they are up. Love to see it. It's a never say die attitude that the Icebreakers have, and it's definitely commendable. वो एकदम जो भी स्कोर हो वो तब भी पूरे इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. Disc is now with Sunil. Foul call है. Stall coming in at 0. Sunil with the disc on the sideline, chilly as ever, looking for options. Beautiful breakthrough there by Sunil. It was a nice high release. Messi to Nikhil. Nikhil on the sideline. Nikhil to Sunil. At the end zone line right now. This is where they need to be patient. Can they score? Lovely dishy pass there to Anundya, and it's a score. Grumpies with another score there, ladies and gentlemen. The score now moves to 7-4. Good point there for the Grumpies. Good point there by the Grumpies. Icebreakers going to get back on offense now. ये गेम इंटरेस्टिंग हो सकता है. हो सकता है, हाँ. इंटरेस्टिंग होने के लिए आपको क्या लगता है, ग्रम्पीज को क्या करना चाहिए? वही जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. अभी भी 3 पॉइंट से ही पीछे है, और आइस ब्रेकर्स की थोड़ी मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसा लग रहा है कि वो जीतने वाले हैं. हाँ. अच्छा, हो सकता है. एक्चुअली ये पॉइंट पे आइस ब्रेकर्स डी पे था, तो ऐसा नहीं कि हर बार डिफेंसिव पॉइंट उनको मिले. मुझे लगा कि वो पूरा 100% दे रहे हैं, पर अगर आप कुछ शायद देख रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये भी हो सकता है. रोहन ग्रम्पीज के लाइन पे कूद रहे हैं, रेडी हैं. रोहन का आपको पता है जो वहाँ पे कूद रहे हैं ग्रम्पीज के लाइन पे, उनका पेट नेम है बीस्ट. बिल्कुल. तो रोहन का पेट नेम है बीस्ट, क्योंकि वो इतना तेज़ भागता है, पूरा कमिटमेंट के साथ लेआउट मारता है, तो हम उसको बीस्ट बुलाते हैं. डिस्क सुनील के पास. आई थिंक सुनील ज़्यादा मोस्टली सैवेज ही खेल रहे हैं इस गेम पे. सारे पॉइंट्स पे दिखाई दे रहे हैं मुझे ज़्यादातर. आई थिंक 80-90% पॉइंट्स पे तो दिखाई दे रहे हैं. नेगी के साथ डिस्कस करते हुए कि क्या होनी चाहिए उनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी. लग रहा है कि पर्सन मार्क करने वाले हैं. ध्वनि लड़कियों के साथ बात करते हुए. मैक एंड भव्या रेजिंग देयर हैंड रेडी फॉर द पुल.
Sunil with his beautiful forehand flick. What a great pull there, ladies and gentlemen. Disc being received by Mac. Mac picks it up from the ground, and it's a turnover. Very uncharacteristic turnover there by Mac. Grumpies have a chance here. They have a very important chance here. Nice breakthrough to the beast, to Rohan. Rohan to Negi. Negi to Anundya. Nice flow there by the Grumpies. Looking for options. Anundya looking for options. Anundya to Rohan. Rohan stuck on the sideline. Is he going to be relieved? And it's another deep, beautiful pressure there from Mac on the defense. This is the never say die attitude that I was talking about. Disc on the sideline to Mac, and it's a turnover. Just a little too close to the sideline there, Om. यहाँ पे तो अभी कॉल हो सकता है? डिस्कस कर रहे हैं कुछ. देखते हैं क्या. मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है कि क्या हो रहा है. उनको लगता है कि डिस्क उन्होंने पकड़ा हुआ था, पर जब गिरे तो शायद किसी के साथ साइडलाइन पे कांटेक्ट हुआ, इसीलिए डिस्क गिरा. तो वो अभी साइडलाइन के साथ डिस्कस कर रहे हैं. देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. जो भी देख रहे हैं लाइव, प्लीज़ हमें बताइए. ड्रॉप अ कमेंट, टेल अस योर नेम, वी कैन गिव यू अ शाउट आउट, वी कैन से हेलो टू यू. बताइए आपको कैसा लग रहा है ये मैच. डिस्क अभी मैक के पास वापस. Mac to Bhavya. Bhavya looking for options, and he sends it in. And it's looking like it's going to be an easy score for the Icebreakers. Good put there by the Iceman himself, Bhavya Desai, the owner of the Icebreakers, with a nice floaty OI to Mac. Mac, chilly as ever, running into the end zone with that effortless speed and timing and precision, and makes that look so easy. Icebreakers now up 8-4. Dhwani speaking with Sahitra on the middle of the field about potential call or just resolving some spirit related issues. The next game, ladies and gentlemen, is at 8 p.m. 8 बजे को है अगला मैच. 2 मैचेस हैं. सारे गेम्स यहीं पे ऑफ सीजन अल्टीमेट के यूट्यूब चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रही हैं. ऑल द मैचेस आर बीइंग शोकेस्ड लाइव so that you all can enjoy it from wherever you are across the world. Tune in and watch some good quality Indian Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee is a sport that's growing in India at a rapid pace, and off-season Ultimate is doing a fantastic job in promoting Ultimate Frisbee in India with showcase games at Bangalore, Surat, and of course the Mumbai Ultimate League itself. They have a lot of things planned for the rest of this year, 2022. Big plans for taking Ultimate Frisbee forward in India. Back to the present, as they would say. The score is now 8-4 in favor of the Icebreakers. Icebreakers are now on defense, and the Grumpies are going to be on offense. Owners of Grumpies, DB back on the line. Good to see DB on the line. He rarely puts himself in, but I think it's good to see him on the line. अगर if you follow off-season Ultimate on Instagram, they've made a reel which has, or I don't know if it's the Grumpies on Instagram that have put up a reel where DB is hucking it deep, and it's caught in the end zone by Bosco. It's a really nice reel. दोनों गेम्स यहाँ पे चल रही हैं ऑफ सीजन अल्टीमेट के यूट्यूब चैनल पे. उस तरफ the afterburners are playing the cutting chai, and we are following the Icebreakers versus Grumpies game. The pull there going out the sideline. It's probably going to be a brick called by the Grumpies. They're going to take the disc into the center of the field and start from the brick mark because the disc has left the field. Nick Hill walking the disc up to the center of the brick. Looks like Chandan is on him. Disc is now live. Dhwani making a cut, beautiful in cut there. They're playing a horse stack, the Grumpies. Dhwani looking for options. Dhwani to UT, captain to captain. Number 29 running deep, but nice, good decision there to send it to DB, DB to UT. Nice grab there by UT on the sideline. I think they need to center the disc. UT putting it up, maybe not the best of throws. And it's a drop. Unfortunately, it's a turnover. Maybe a slightly risky throw there. Could have holstered that throw.
could have taken their time, could have been a little more patient, but it is what it is, ladies and gentlemen. कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में. टर्नओवर होते हैं. अभी उसके बाद क्या होता है वो ज़रूरी है. Disc is now with Sushant. Sushant to Chandan. Lovely flow there by the Icebreakers. Rizwan to Noman. Noman centering the disc back to Rizwan. Rizwan looking deep. Nice forehand flick. And is it a score? It is. It is a score there. Beautiful grab from Chandan. बेहतरीन grab Chandan द्वारा. Chandan भी flying spirits के लिए खेलते हैं. हाँ बिल्कुल, वो कैप्टन है हमारी टीम के. वो कैप्टन है आपकी टीम के. बढ़िया बढ़िया. तो आपको क्या लगता है उनका क्या एज अ हैंडलर बढ़िया खेलते हैं या एज अ कटर बढ़िया खेलते हैं, क्या लगता है आपको? कटर. I think जैसे ओम ने कहा he is primarily a cutter but I've seen him many times in the handling space as well, but बहुत ही बढ़िया स्काई करके उन्होंने ये ग्रैब किया. The score, ladies and gentlemen, is now 9-4 with the Icebreakers in the lead. Beautiful leap and grab there by Chandan. Icebreakers ऐसा थोड़ा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा लीड ले रहे हैं अभी. 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है. तो ग्रम्पीज के लिए अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल होने वाला है. फिर भी है उनमें. मेसी अभी आ गए लाइन पे, देखते हैं. बिल्कुल एक हो सकता है गोल. जी जी. 1-2 अगर फटाफट बैक टू बैक पॉइंट्स हो जाएं तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा वो जो उनको एक पुश चाहिए वो मिल जाएगा. बिल्कुल. अभी ये देखना पड़ेगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो आइस ब्रेकर्स का डिफेंसिव लाइन है एकदम स्टैक्ड है. ऐसा नहीं है क्योंकि वो 4 पॉइंट से लीडिंग है वो उन्होंने एक वीक लाइन कॉल किया है, फिर भी उन्होंने एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन कॉल किया है आइस ब्रेकर्स ने. दैट्स द पुल अप बाय मैक. Disc landing on the right side of the field, centered to Sunil. Sunil looking for options. Sunil to Farhan. Farhan back to Sunil. Sunil looking for options, asking Anundya to stretch deep, and it's a cup. It's a cup. They're playing a zone defense, a little bit of a floaty zone defense. The disc on the sideline to the and that's a foul. A foul call on Tahir, and he accepts it immediately. The disc with Farhan. Farhan looking to center the disc, and it's a D. No, it's not. Sunil ये disc छोड़ने नहीं वाला है. Sunil looking for options, and disc going on the sideline, and that's a very very poor throw there by Farhan. Unforced error there Farhan द्वारा. कोई बात नहीं, होता है, but I think Grumpies need to get the disc back. Sushant with the disc. Mismatch here. Tahir, no mark on him. The Grumpies really need to get back on defense quickly. Sushant has put it up to Mac, and it's a score. Fantastic display over there by the Icebreakers. The fact that they are not letting up even though they have a big lead is truly commendable, and it's something which every other team in the Mumbai Ultimate League can learn from. Even though they are up, it's not like they are taking it easy or playing weaker lines. Icebreakers now 10 up, 10-4. बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आइसब्रेकर्स. हमने पहला गेम उनके खिलाफ खेला, बॉम्ब स्क्वाड वर्सेस आइसब्रेकर्स. तो आपको क्या लगा वो गेम, कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही वो 100% देते हैं उनके ग्राउंड पे. जब भी आते हैं लाइन पे, कोई भी रहे, अच्छे से खेलते हैं. फाउल कॉल भी ज़्यादा नहीं हुए उस टाइम. अच्छा, उनका बिहेवियर भी अच्छा था. मज़ा आया उस गेम में भी. बिल्कुल बिल्कुल. काफ़ी इंटेंस गेम था. इट वेंट डाउन टू द वायर, एंड there's been a lot of discussion on the score line on that game and the post game controversy, but we won't bring that here right now. The committee has taken a call and all the teams are adhering to the call. Good spirit shown by the Icebreakers as well in accepting the verdict of the commission committee. This game, however, they have a massive lead of 6 points. The Icebreakers are up
10-4. Still, Bhavya, as you can see, is not letting up. He's giving 100% and making sure that his team is not taking it lightly. And the pull, मेरे पास नहीं है watch. and the pull is outside. It was an OI pull. The wind just carried the disc and outside the field. Game will probably start either at the sideline or at the brick mark, with the icebreakers in possession, with the grumpies in possession. Afzal on the mark. Good pressure on defense, but a nice cut. Prerna now with the disc, looking for options. And it's another D by Atul. क्या करेंगे आप? इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स ऑप्शन ही नहीं देते हैं आपको. और ये दोबारा टर्नओवर, uncharacteristic turnover, icebreakers द्वारा. Chandan turfed that one while trying to pass it to Afzal. Lot of activity around the disc, and it's a forehand huck. Looking for her in the end zone, but that was a little bit of a mismatch. She's giving her 100% on the disc against Chandan. Is it going to be another turnover? No. Atul, easy all day, every day, looking to put it up, and a beautiful OI huck to the end zone, but a little bit of a misread there, and the disc just floats over his head. Beautiful, beautiful put there by Atul. I think the sending the put up was the right verdict, but maybe just wasn't read to perfection. Disc back in the possession of the Grumpies. Grumpies के पास एक और मौका यहाँ पे एक स्कोर करने के लिए. I think हैंडलर्स को थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए. 3 हैंडलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे मुझे, और ये एक और टर्नओवर, और ये इजी स्कोर आइस ब्रेकर्स द्वारा. सच बताऊं दोस्तों तो थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर गेम बिल्कुल 100% कम्पिटिटिव हो. ये गेम हल्का सा वन साइडेड हो रहा है. बट I think another thing that we need to commend Grumpies and the captain and the owner for is कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सबको गेम टाइम मिल रहा है. सारे प्लेयर्स को वो लोग खिला रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं खेलने के लिए, जो कि I feel is also a very one of the main motives of the off-season Ultimates Refex Mumbai Ultimate League is to give opportunity to new players. जैसे आप हो ओम, आपने सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेला और फिर इसके बाद आप मुंबई अल्टीमेट लीग में आप खेल रहे हो विद सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द नॉर्थ, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल. पहली बार आया हूँ एमयूएल में. बहुत से प्लेयर दिखे हैं नए. बहुत से प्लेयर को जानता भी हूँ, जैसे आतिर भैया, अन्नी भैया, बहुत, और मिसिंग भी है बहुत. और देखना चाहता था. हम पहले पुणे में प्रैक्टिस करते थे सब मिलके, तो उनको भी देखना चाहता था. एमएल में मिस हो गए, और एक्सपीरियंस मिल रहा है पूरा. थोड़ा लूज़ हो रहा है गेम मेरा भी, तो उसको ठीक कर लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबके साथ ही होता है. बट आई थिंक आप जैसे आपने कहा कि वो जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द पुल अप बाय नोमान, द डिस्क विथ Sunil to Messi. I feel like I've said that 50 times today. Messi back to Sunil. The 2 brothers from Pune. They're not blood brothers, they're disc brothers. Good movement here from the Grumpies. Again, I think a lot of crowd around the disc. Nice save by Sunil. And Sunil looking for options in the end zone, but holds it back. And nice put there to Messi. Messi looking for options. Now looking for Sunil. And and it's a turnover. Unfortunate turnover there from the Grumpies, but they need to get the disc back. And try to score another point. Rizwan with the disc now for the Icebreakers. Rizwan to Altaf. Altaf sends it deep. Travel call.
Let's see if it's going to be a turnover. And anyway, the disc lands in the hands of a Grumpy. Beautiful disc there. Beautiful D there in the end zone. Disc back in the hands of the Grumpies. Let's see if they can continue what we had predicted, that they would bring this point back. Sunil with the disc, no mark on him. Rizwan running up to him. Sunil looking for options. And it's another fake. Nice throw there, low release into the wind to Messi. Messi to Dhwani. Dhwani now in the center of the field. Good mark on her. She doesn't seem to have too many options, but somehow she finds number 12. Number 12 now with the disc looking for options. And to number 3, beautiful pass. Disc being moved by some of the newer players in the Grumpies. Now back in the hands of Bajirao himself, Mr. Sunil Verma. The disc centered to Messi. Grumpies really need to center the disc a lot more, and it's a beautiful block there by Altaf. Beautiful block. Altaf to Noman, and it's another score. Wow, wow, what a D, ladies and gentlemen. That is highlight worthy. Altaf with the block puts it up to his brother Noman, and it's another score for the Icebreakers. Icebreakers are looking unstoppable right now. Score is now 11-4. Fantastic, fantastic defensive play there from the Icebreakers. Grumpies really need to center the disc a little more. They need to focus on converting more O points. Anyway, this game is looking a little bit like the fat lady is going to sing any minute, but it's been fun. It's been fun bringing this game to you. Just 15 minutes left now in this game, but it's tough now for the Icebreak for the Grumpies to come back into this one. बहुत ही मुश्किल होने वाला है. अगर यहाँ से they literally will need a miracle, as one would say. जो कि मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, but anything is possible. Pardon me, the score is now 12-4, ladies and gentlemen. Icebreakers just 1 point away from taking this game and adding another 2 points to their kitty. Disc is with the Icebreakers. Atul getting ready to pull, and it's a pull. Beautiful OI throw there, backhand. Disc grabbed, centered. Good movement there from Farhan, Manan, and it's another turnover. Little bit of miscommunication there, ladies and gentlemen. क्या बताएं आपको, just isn't a Grumpy's day. Atul to Sushant. Sushant looking for options. Sent back to Atul. Atul looking for a score. And a blady OI. And it's a D. Good D there. Good D there by Farhan. He really needs to pick it up now. Looking for options. To Anunya. Anunya now looking for options. Looking for Prerna. Sudu closely keeping a watch. Back in the hands of another fellow Grumpy. Again, disc getting stuck on the sideline. Nice put. Will Farhan get it? Oh, and just in front of us here in the commentary box. Just a little bit out of his reach. Maybe had to lay out a little earlier. Sushant picking up the disc, walking it up to the sideline. Sushant quickly centers the disc to Atul. Atul to number 10. Great flow here. This is what I love about the Icebreakers offense, is that they are chilly, and commentator's curse has hit the Icebreakers. An uncharacteristic turnover on the sideline. Disc in the hands of a Grumpy. Looking for options, Farhan there. Farhan to Prerna. Prerna looking for options, now centers the disc to Anunya. Good cut there. Anunya to Manan. Manan now back to Farhan. Farhan putting it forward. Pick called, but Farhan gets it. Question is if the pick was consequential or not.
तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी. बातें चल रही हैं. आई थिंक अगर आप अल्टीमेट फ्रिस्बी प्लेयर हो तो आई थिंक आपको बात करना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी बात करते हैं फील्ड पे. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है अल्टीमेट फ्रिस्बी प्लेयर का, कि वो जो भी हम प्लेयर्स होते हैं, हम जब भी, क्योंकि सेल्फ रेफरीड स्पोर्ट है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. आपको अपने ओपोनेंट के पास से ओपोनेंट के साथ बात करना है, आपको उनके साथ डिस्कस करना है और एक डिसीजन म्यूचुअली आपको दोनों को अराइव करना है. तो क्योंकि पिक इन दिस केस, बिकॉज द पिक डिडंट अफेक्ट द प्ले, द डिस्क विल स्टे विद फरहान and he will continue from there. Farhan number 2 playing from the voice of Ahmedabad. I think we are at the 70th minute mark. I just heard a whistle. Now the disc with Farhan. No, we are not at the 70th mark, ladies and gentlemen. Number 40 with the disc now, Prabhu. Prabhu looking for options. Dump to Farhan. Farhan needs to center the disc, but again choosing to send it up on the sideline, and it's a turnover by number 8. Icebreakers just need 1 point to wrap this up, call the tailor, as you would say, and stitch their jerseys for the finals. We're still a little ways away, but I'm making a prediction here, ladies and gentlemen. I feel like the Icebreakers are going to go all the way to the finals. Really will need an upset, and Sushant puts it up. Atul making a run deep. Is he going to get there? What a layout! What a terrific way to end and seal that game, ladies and gentlemen. Fantastic, fantastic layout bid by Atul, and a terrific score to seal this game up at 13-4 to the Icebreakers. It was a real pleasure bringing you this game. Refex presents Mumbai Ultimate League, presented by Off-Season Ultimate Agile Sports at the Wings Sports Arena in Bandra in Mumbai. Beautiful setting, beautiful people, and it's going to be a crackerjack of a tournament. Really had a lot of fun presenting this game to you. I hope you had a good time. I hope you have a good evening. Stay safe. COVID is making a little bit of a comeback, but let's not let it get our spirits down. Have a great evening, ladies and gentlemen. This is me, Akhil, saying thank you, and I will see you next week. If you guys are staying around, the Bomb Squad Mumbai Bantai's game is going to start at 8 p.m. We have another game at 8 p.m. also on the Off-Season Ultimate YouTube channel. Make sure you tune in, support Ultimate Frisbee, help us grow the sport, and once again, have a good evening. Good night.